Good afternoon, everyone, and welcome to today's insightful webinar titled AI Driven Growth: How Startups Can Leverage Artificial Intelligence for Scalable Marketing Strategies. I am Satna Singh, your host for this session. On behalf of the entire team at Satna Incubation Center and Satna Smart City Development Limited, I extend a warm welcome to all. And I am honored to introduce our speaker for today's session, Dr. Nishtha Tyagi. She is the Product Marketing Manager at Jio Platforms Limited and has experience in leveraging AI technologies to drive growth and innovation. Her expertise in marketing and technology has empowered numerous startups to scale in today's competitive market. Today we'll explore how AI can be a powerful tool for startups. कैसे स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग को स्केल कर सकते हैं। आज के टाइम में एआई बहुत तेजी से मार्केटिंग में रिवॉल्यूशन ला रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 80% से ज़्यादा बिजनेसेस एआई टूल का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी कैंपेन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर्सनलाइज और इफेक्टिव बन सके। स्टार्टअप्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा इम्पैक्टफुल मार्केटिंग करने की। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट टू आवर व्यूअर्स, if you have any questions or doubt during the session, feel free to drop in the comment section. We'll answer all these queries at the end of the session. So get ready to learn something about AI and marketing. So let's start the session with Dr. Nishtha. So over to you, Nishtha. Thank you so much, Sanjana, and very warm good afternoon, one and all, to all the viewers, whoever is listening to this webinar. Very warm good afternoon. I'm Dr. Nishtha Tyagi, and I've been a product marketer since long time with Jio. And today, I'm sure that I would be able to give some really nice insights on how AI can leverage your, startup game, and it can definitely help you scale up your businesses and be cost effective as possible. So जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, it is a very interactive webinar. So in case you have any doubts, any questions, please feel free to ping Sanjana, and we'll be more than happy to answer all your questions and queries. Right. So let's begin. Today we'll be talking about that how AI can help in marketing of for the startups and be the game changer, because we have been hearing about AI. It's the boom in technology that has happened over past few years, and a lot of revolution has already happened here as well. So I would just request Sanjana, could you please play the slide? And before beginning, I would just like to give a quick brief about me, that I have trained more than 10,000 professional students in marketing domain and in tech marketing professionally, and have been an author and have been a TV host for Startup India and Atmanirbhar Bharat, and have been a startup mentor as well. So you guys can follow me on LinkedIn, and we can stay connected and get the game rolling from there as well. All right, so let's begin. Today, next slide, please. So today we'll be talking about AI, how AI can help, particularly from marketing domain to startups, right? So जब हम AI की बात कर रहे हैं, सबसे पहले it is very important for all of us to understand what exactly is AI, right? Because AI probably seem like a very vague label of any of the machine that could think like a human, right? But fiction writers like to imagine a more generic, generalized AI, one way that answers any of the questions you might have, or to do anything a human can do. So it is a humanized kind of a form that we all have seen it, right, over the past few years. Now, it's not the most realistic way to think about it, but by definition, what exactly AI means is that artificial intelligence refers to the stimulation of human intelligence in machines that are programmed to think and act like humans, right? They think and act like humans. So this is the basic definition of AI. Because
to proceed further, it is very, very important for all of us to understand what exactly is AI, right? Because जैसे humans act करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, whatever we do, right? They try to replicate that same thing. This is what AI is all about, and AI is here to make our work more easier, more convenient, more cost effective, so that we can scale up our businesses, so that we can become more cost effective about it, right? So by using vast amount of data, and algorithm is being used by AI, and they play with that database and then give us the results that we are asking for it, right? So इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि prompt engineering का जो career है, it has taken a spike, right? It has taken a toll. Why? Because AI also needs somebody who can give them apt instructions to scale up their businesses, and it is really, really important that somebody has to be very vigilant about it. What kind of instructions, promptness are you giving to AI for the output that you want out of it, right? The easiest example to differentiate would be can you please play the next slide, Sanjana? Yeah, the easiest example that we can think about is it that like if you have ever used Alexa, so we always keep saying, Alexa, play this song, Alexa, play a joke, right? We keep asking Alexa these kind of a question. So Alexa is also working on the AI model, राइट? एंड जब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसके अंदर ही आता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, which is again a part of AI. So AI is a really vast and a huge term, right? And the kind of instructions, the kind of inputs are you giving to the AI, उस पे ही depend होता है what kind of a output will you be getting out of it, right? So अगर आप उसे कोई voice command दे रहे हो, for example, if I am asking my Amazon Alexa, Alexa play this music, Alexa will listen to my command, to my input, and she'll or it will automatically play that song or play that whatever I have asked her to do. So it is again one of the versions of AI, right? So these are some of the examples, and I'm sure that a lot of viewers might be using, iPhones as well. Could you please play the next slide, Sanjana? So if you just use iPhone as well, so आपने देखा होगा कि जब भी हम it ask for the Face ID as well. Next slide as well, because we have already discussed about the definition. Yes, and like I already discussed with all of you about machine learning and deep learning, right? So it is a part of AI, right? Again, I'm reiterating the same thing, because machine learning is what it is like. आपके पास जितना भी database होता है, right? जो भी आप informed decisions लेते हो, they are based on that. Whatever kind of a data you are getting, so it is for parsing the data. And when it comes to deep learning is all about algorithm. What kind of a algorithm are you using, when you are creating an artificial neural network? So I'm sure that you already might be knowing about a lot about algorithm and how important it is in marketing domain, right? क्योंकि जैसे हम Instagram पे कोई भी reel चलाते हैं, right? We play any of the reel or any of the videos on YouTube, कोई भी short हम देखते हैं, तो repetitively जो भी हमारा interest होता है, based on that algorithm, automates that, and हमारी interest वाली reels ही we keep on seeing it now and then, and we keep guessing कि how does they know about our mood, about our liking, what we prefer and everything. So it's not a coincidence. It's not that they are just analyzing the kind of a data that you are using on your devices, right? Based on that, algorithm works and they play it, right? So next slide, please. So coming back to the example that I was giving, when it comes to kind of instructions that are we giving, like one of the example I gave about Alexa, so it is again one of the form of AI. How are we playing with the algorithm and the data and the input that we have given in terms of voice, right? And same with iOS users as well. When we are using Siri, right, we keep asking Siri, Siri play this, Siri do this, right? And they listen to our voice notes and our inputs, and then accordingly they process the data. So next slide, please. And the same way happens with the iPhone users as well, right? Because जब आप face ID scan करने की बात होती है, या फिर जब आप privacy settings पे अपना thumb enroll करते हो, it is all automated. It is also part of AI, right? Because आप वैसा input दे रहे हो, है ना? And based on that only
you are getting that safety thing as well, because cyber security is again a very big thing in today's world, so it is also part of it. So when we talk about AI, is used more than ever in various industries, in various domains, in various jobs, and it is touching every bit of life of everyone, राइट. सो जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तब भी एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बी इट फेसबुक मार्केटिंग, बी इट इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बी इट यूट्यूब मार्केटिंग, एनी काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, because they analyze users interest, their taste, and based on those algorithms they plan that what the user is interested in, and based on that people can, or entrepreneurs can, or startups can plan their content strategy, right? Be it any kind of a content are you planning, be it you are planning a verbal kind of a content or video content, or writing blogs and all. So any kind of a content you can plan based on the likings and the demand of the user. And how will you know the demand of the user? When you can analyze the database, when you can analyze the algorithms that are being provided to you. That, for example, a teenager who's studying in school, is more interested to learn about maths, or for example, is more interested to know about more of the hacks that are happening in her age, right? So accordingly you can plan a strategy. If they are from your TG, if they belong to your target audience, then accordingly you can plan your content strategy, that for this genre of audience I need to make such kind of a videos, right? So accordingly आप streamline कर सकते हो अपनी content strategy as well, based on the social media algorithm analysis, right? Could you please play the next slide, Sanjana? Yeah. So when it comes to social media advertising, and when it comes to predictive analysis, analytics, so see how you can apply this AI in marketing. It is a $1 million question, and it is something that you really need to understand, right? Because when we talk about marketing and AI, we have a huge scope here, right? Huge. I mean, entrepreneurs and new budding startups can scale it like anything, because like I already discussed about social media advertising, right? अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको कुछ कॉमेडी ड्रामा देखना है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, यू हैव सीन 1 or 2 movies of that sort, then automatically the algorithm will be set in a way कि आपको उसी genre से related movies Netflix will play, कि these are your interest and you can go for it. And for example, if you are into fiction, or if you are into dramatic kind of a movies, and आपने एक दो ऐसी movies देख ली, उसके बाद Netflix अपने आप play करेगा उसी domain की more movies of your taste, right? So just imagine if you are having a production house, or if you are into filmmaking, or if you want to scale that kind of a business. So it is so much easy for you to predict कि maximum कौन सी audience is interested in what kind of a content, right? तो उसके accordingly आप plan कर सकते हो अपना next step कि what kind of a content should you provide, to them to scale your business, to have more success into it, right? पहले हम इतना prediction नहीं कर पाते थे, right? Because इतना AI और algorithm का इतना scope नहीं था. And same with Amazon. If I'm sure that we all keep shopping from Amazon, right? Amazon, Flipkart, अभी तो कितनी big sales हुई थी वहाँ पे, right? So whenever you keep adding things in your cart, right? The similar kind of a product based on your taste, they keep on suggesting on it कि आपके taste के according, for example, if you are a fashionista और आपने बहुत सारे clothing attires add on कर रखे हैं अपने cart में, तो similar to that taste only Amazon will suggest you more options, right? So it is again a game of algorithm. So if you are into a business of the clothing, or if you are into a business of say for example electronics, right? और आपने अगर similar kind of a products add कर रखे हैं अपनी cart में, so you can analyze the psychology of a buyer, that what kind of a product are they interested in. So probably huge chances are कि आप उसी domain का उसी type का product create करो, being a startup, right? So it helps you in that way. It helps you in predictive analysis. Another important example that I want to share with all of you is that with AI, that आजकल
automated chatbots आते हैं, right? There are a lot of AI platforms who are providing you chatbots as well. So अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है, being a startup, that is a bare minimum that आपकी obviously वेबसाइट होनी चाहिए to scale your business, to build that kind of a credibility among the users and your end consumers. So if you have a website, and if there are some kind of a Q&As and queries that your audience is having, right, so you can attach a chatbot, automated chatbot in your website as well, wherein automated answers would be given by them. Chatbot ही आप customer के सारे problems के answers देगा. Like for example, if somebody want to buy, say for example, one dress from your website, right, and they are asking that how much time will it take to return if in case it doesn't fit me, right? तो chatbot automatically analyze करेगा उनकी queries को और answer करेगा. So your half work is done. उसके लिए आपको अलग से कोई human resource hire करना पड़ता to answer the queries, जो भी startup, जो भी customers की हैं, उनकी basic problems, या उनको जो भी जानना है about your product, your services that you are offering in your platform. But it has become so easy. आप एक ही बार में पूरी information chatbot में upload कर दो and it will automatically solve an answer on your behalf. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्लोबल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे दिन हो रहा है एंड यहाँ पे रात हो रही है, एंड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इज डे टाइम, राइट, एंड अ कस्टमर इज हैविंग क्वेरी एट दैट time, so obviously आप 24 hours you cannot be available because you might be sleeping at night, right? But on your behalf chatbot would be answering the query, and at a stage if उनके पास उतना डेटा नहीं है या आपने नहीं फुलफिल कर रखा है या कुछ अलग क्वेश्चन है उनका क्वेरीज है, तो इट विल मेल यू. So things are so easy, right? These are some of the examples, and even you can make websites with AI. So again, it is so much easy. There are nth number of tools available, AI tools, which can help you in making the websites as well. So सबसे important crux of this slide is it is the most important slide, and the crux is this, that you can do predictive analysis. Now what is predictive analysis? You can predict the behavior of the customer. ठीक है, आप जो भी शॉपिंग कर रहा है Amazon पे, या जो भी टाइप की मूवी Netflix पे देख रहे हो, या जो भी आप खाना Zomato पे ऑर्डर कर रहे हो, या आप कुछ भी XYZ प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, राइट, ऑल योर डेटा इज बीन कैप्चर्ड बाय देम, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको सजेशंस देते हैं कि और क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनको आप केटर कर सकते हो, राइट? सो अगेन इट इज रियली हेल्पिंग इन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बडिंग स्टार्टअप हो, राइट, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रखा है, अपने डोमेन सिलेक्ट कर रखा है कि आई वांट टू बी इनटू टेक, और आई वांट टू बी इनटू अ क्लोथिंग बिजनेस, और आई एम सॉल्विंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, या जो भी आप पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो, you can analyze the behavior of the customer by doing a pilot testing, right? आप अपनी एक पायलट टेस्टिंग करके अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो टू कम ऑन देयर, एंड बेस्ड ऑन योर टीजी आप ये एनालिसिस निकाल सकते हो कि आपके कस्टमर के टेस्ट क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, व्हाट आर देयर लाइकिंग्स, व्हाट डू दे डिसलाइक, हाउ डू दे प्रेफर समथिंग, राइट? एंड अकॉर्डिंगली आप फिल्टर ऑन करके यू कैन प्लान द कंप्लीट स्ट्रेटेजी अबाउट योर प्रोडक्ट. आप रीडिफाइन कर सकते हो अपना प्रोडक्ट कि व्हाट बेस्ट शुड आई डू इन दैट thing, right? So again, it really helps, and this is something really important, and हम सबको ये समझना चाहिए कि in the AI world, when we are talking about marketing specifically, predictive analysis is the key. आपको पता होना चाहिए कस्टमर का बिहेवियर, योर एंड यूजर का प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस. बेस्ड ऑन दैट यू कैन इवन डेवलप योर प्रोटोटाइप प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन दैट you can even enhance your product, and based on that you can scale your sales, right? For example, अगर ट्रेंड में if there is something which is going on, there is a season, or for example if a lot of people are buying only sarees, right, for example, and you are into clothing business and you keep on selling the western outfits, will it work? It will not. आपको logically सोचना पड़ेगा कि maximum customers are adding to their cart this particular attire, so this is the kind of a product I need to enhance or work on, right? So these are some of the examples that can help you enhance your product and will definitely help you in the profitability and scaling up your businesses as well. Yeah, next slide please. So it is so important that if we are catering to
these suggestions and we are understanding these suggestions which we are getting from the customers by predictive analysis, it becomes more easy for us to adapt for that particular product, to get more flexible for that product. For example, if आपका startup already चल रहा है, right, for a long time, for like say 3-4 years से आप अपना startup चला रहे हो, but there is a stagnant in the growth, you can't see growth. So how can you scale it? How can you bring up that kind of a innovation कि आपको पता चले कि अभी क्यों स्टक हो गया है, सेल इतनी क्यों नहीं हो रही है, या तो मेरे पास बहुत डेड इन्वेंट्री है, या फिर मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर आपने ये एआई चैटबॉट्स लगा रखे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप इजीली कस्टमर के पेन पॉइंट्स भी समझ सकते हो विदाउट एक्चुअली गोइंग टू देम, राइट? बिकॉज अर्लियर क्या होता था, व्हेन एआई वाज नॉट इन द पिक्चर, तब आपको खुद ही कस्टमर के पास जाके समझना पड़ता था व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम, ठीक है? मतलब यू हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, बट अब इतना ऑटोमेटेड हो गया है कि चैटबॉट पे ही कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम, अपने प्रेफरेंसेस, अपनी लाइकिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डेटाबेस दे ऑलरेडी शेयर, राइट? तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फिल्टर, टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन यू गेट सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एंड गेट रिड ऑफ देम. So again, according to the feedback that you are getting from the customer based on these AI chatbots, you can easily innovate those products, या आप थोड़ा flexibly उनको advance कर सकते हो और कुछ नया add on कर सकते हो, so that it becomes really buzz of the town. So this is how you can scale and enhance AI in your game and really get really good results. So these are some of the examples that I have shared. Next slide, please. So, today also, after sharing the importance of AI and how machine learning and deep learning is a part of it, is a subset of AI, it is really, really important to understand ki how AI can help us scale our marketing game, and also some of the business ideas that AI can bring in, right? Because see, what is happening, जब से AI आया है ना, आपका time बहुत save होता है, right? Earlier you used to write long emails, earlier you used to write long content. If you are a blogger, if you are into photography, if you are into fashionista, if you are into tech blogging, so if you are a travel blogger even, so आपको बहुत सारी content खुद लिखनी पड़ती थी, right? But अब क्या हो गया, with chat gpt and with other AI platforms, बहुत सारे ऐसे platforms हैं जहाँ पे सिर्फ आपको prompt engineering का use करना है, जहाँ पे आपको सिर्फ keywords put up करने हैं कि act like a social media marketing expert and draft this mail, this content for me, or act like a, you just have to like give them prompts and it will do it for you. So it is saving your time, number one. Number two, you don't have to hire somebody in your company who can look after the content marketing thing, because content is already being delivered to you by the AI expert. Number three, it is so cost effective, क्योंकि अगर आप किसी को hire करते for writing contents or for developing website for you or for doing social media marketing for you or for developing this chatbot technology and everything, so just imagine आपको कितना बजट लेना पड़ता और कितने आपके एक्सपेंसेस होते, राइट? तो वो सारे आपके चक ऑफ हो रहे हैं. देन इट इज सो कन्वीनियंट, राइट? इन अ फ्लो. आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, आई बिलीव दैट टाइम से इंपॉर्टेंट इज नथिंग, नॉट इवन मनी, राइट? इट इज सो प्रेशियस, इट इज सेविंग योर टाइम लाइक एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू गिव प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज डूइंग दैट थिंग फॉर यू. चाहे आपका वेबसाइट बनाना हो, चाहे आपके चैटबॉट क्रिएट करने हो, चाहे आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस रिपोर्ट निकालनी हो, चाहे आपको कंटेंट बनानी हो फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर ब्लॉग, फॉर योर सोशल मीडिया हैंडल्स, फॉर एनीथिंग. स्पेशली आप देखो, जब वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ऑलरेडी मार्केट, राइट? तो उनकी तक कंटेंट, उनकी वीडियो एनहांसमेंट से लेके, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके, यू कैन डू anything with AI. So things have become so simpler, so easy, so convenient, so time saving, so cost effective, and you can scale your business. तो आप important चीजों पे focus कर सकते हैं rather than wasting your time on all these things, right? So आप strategy पे work कर सकते हैं being a startup. Being an entrepreneur, आप और भी important चीजें कि आपका future का goal क्या है, how can you formulate a futuristic strategy for a long term. You can focus on how you can enhance your corpus fund,
आप बहुत सारी और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे फोकस कर सकते हैं व्हेन यू नो कैन यूज इफेक्टिवली एआई टूल्स इन योर मार्केटिंग थिंग एंड इन योर businesses, right? So yes, coming to top 10 business ideas that I'll be suggesting to you with AI. You can have next slide, please. So, see, number one idea that I would suggest is AI when it comes to content creation, right? आज की डेट में content is the key and is the king, right? आप कोई भी टाइप की कंटेंट ले लीजिए, बी इट अ रिटन कंटेंट, चाहे आप लिख रहे हो, बी इट अ वीडियो कंटेंट, राइट? चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो वीडियो में, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, या आप कुछ भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, एनी फॉर्म ऑफ अ कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन इज द बिगेस्ट बिजनेस। अगर आपने अभी तक अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया है एंड यू रियली वांट टू स्केल योर स्टार्टअप एंड यू रियली वांट टू डू सम वंडर्स इन द वर्ल्ड, इन एआई वर्ल्ड, इट इज सो इजी फॉर यू। आप अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी सेटअप कर सकते हैं, आप आपका खुद का एक वेबसाइट क्रिएट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विसेज? आप बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट की कंटेंट, उनके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स की, इंस्टा की, फेसबुक की, ये वाली कंटेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लिंक्डइन की कंटेंट। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं और बिजनेसेस को, बी टू बी काइंड ऑफ अ बिजनेसेस को स्केल करने के लिए उनके बिजनेस, राइट? एंड यू कैन अर्न फ्रॉम इट बाय डूइंग नथिंग, लाइक ये तो बहुत ही मेयर काम है कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, अच्छा सा चैटबॉट एक डालना है, आप और आपके फाउंडर, आप बेसिकली लाइक 2-3 लोगों की टीम से स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट बनाने के बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक द वेरी कॉमन टूल वी ऑल नो अबाउट इट इज चैट जीपीटी। मिड जर्नी से आप अच्छी फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं ऑफ एनी ऑफ द कंटेंट। जस्ट द थिंग इज दिस, आपको विजिलेंट होना पड़ेगा अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लाइक आप व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट्स आर यू गिविंग टू दीज एआई प्लेटफॉर्म्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप स्मार्ट प्रॉम्प्ट देंगे, आपको रिजल्ट्स रियली अच्छे मिलेंगे, राइट? सो these are some of the tools that you can use and these are some of the businesses that can scale and do wonders, right? तो आप अपनी नहीं हेल्प कर रहे हैं, आप बाकी और स्टार्टअप्स की भी हेल्प कर रहे हैं एंड यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट। आपका कुछ जा नहीं रहा है इसमें, राइट? चैट जीपीटी इज क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर यू, मिड जर्नी इज क्रिएटिंग अ फोटोग्राफ्स फॉर यू, एंड you can sell it, and provide these services to other people, like UI UX team है कोई, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कंटेंट तो आप बहुत सारे अदर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स को या प्रोफेशनल्स को, इवन जिनके पास टाइम नहीं है टू राइट कंटेंट बट दे वांट टू बी द बज इन द टाउन, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस दैट आई वुड सजेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। And the second most important business that I would suggest is AI assisted e-learning, right? तो बहुत सारे e-learning platforms हैं, like AI platforms हैं जहाँ पे आप e-learning opportunities दे सकते हैं, businesses को, like even startups को, क्योंकि आजकल इतना easy हो गया, like अगर आप Coursera पे भी हो या बहुत Udemy पे भी हो, बहुत सारे अलग platforms हैं जहाँ पे बहुत सारे courses आ रहे हैं, तो आप अपना खुद का एक कस्टमाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। लाइक आजकल एआई का इतना बूम है, या फिर मशीन लर्निंग के बारे में लोग जानना चाहते हैं, या डीप लर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे यू कैन क्रिएट दीज, जो भी आपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस के जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसके रिलेटेड आप कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। एंड आजकल देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स, एआई प्लेटफॉर्म्स विच आर गिविंग वर्चुअल ट्रेनिंग ऑन योर बिहाफ। आप अपना करिकुलम पूरा डाउनलोड कर दीजिए एंड वहाँ पे एआई टीचर्स विल टीच द स्टूडेंट्स, राइट? तो इसमें भी आपका कुछ जान ही रहा है, राइट? यू डोंट हैव टू हायर सम ह्यूमन रिसोर्स who can teach students or who can draft the syllabus or the curriculum. Everything will be automated, everything will be done on its own. So again, this is a amazing opportunity when it comes to startup businesses. So अगर कोई भी education related startup है and they want to really scale up high, this is again one of the really good things that they can do. So next slide please. Yeah, again, one of the amazing business idea when it comes to AI is e-commerce assisted business, right? So ये जितने भी business ideas हैं, ये marketing point of view से बहुत ज़्यादा synced है, क्योंकि इन सब में आपको AI marketing ही लगेगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? They are like bare minimum
जिसमें आपकी बहुत ही लोएस्ट लगनी है, ठीक है? दीज़ आर द काइंड ऑफ आइडियाज़ दैट आई एम सजेस्टिंग यू, और इसमें आपकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लाइक प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज़ द की व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग स्पेसिफिकली। तो आप कैसे स्केल कर सकते हैं बिज़नेस। इन सारे बिज़नेस में सिर्फ आपकी बेसिक प्रेडिक्टिव एनालिसिस मार्केटिंग ही लगेगी, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू ई असिस्टेंस, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। एक ऐसी वेबसाइट बना लो आप ऑटोमेटिकली विद एआई, जहाँ पे आप सेल कर सकते हो चैटबॉट्स डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, राइट? आप ई कॉमर्स के डोमेन में जा सकते हो, लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, या कोई एपरल वाला क्लोथिंग का बिजनेस है, या कोई फूड का बिजनेस है, अलग अलग डोमेन के बिजनेस को आप प्रोवाइड कर सकते हो ये सर्विसेज कि सी वी आर डेवलपिंग चैटबॉट्स, एंड आई एम श्योर कि आपकी वेबसाइट में या आपके बिजनेस में चैटबॉट्स की बहुत जरूरत होगी, एंड वी कैन हेल्प यू इन डेवलपिंग इट एंड applying it in your businesses. So again, it is a boom, right? क्योंकि आप भी automatically create कर रहे हो, you are not doing anything on your own, you are developing these AI chatbots अपने आप से, right? And you are selling it to other startups and entrepreneurs based on their domain. Now यहाँ पे आपको थोड़ा सा cautious ये रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस के अलग-अलग क्वेश्चंस होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फूड इंडस्ट्री वाले को आपने अपना चैटबॉट सेल किया, राइट? फॉर आंसरिंग द क्वेरीज दैट दे आर गेटिंग इन देयर वेबसाइट। सो ऑब्वियसली आपके ये क्वेश्चंस तो होंगे नहीं कस्टमर के कि मुझे साइज प्रॉब्लम है, या क्लोथिंग बिजनेस में जैसे होते हैं, या कलर प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट वाज नॉट दैट गुड, या फिटिंग का इशू था, या व्हाटएवर, राइट? फूड के अलग क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वैसे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि टेस्ट कैसा था, व्हाटएवर यू ऑर्डर्ड फ्रॉम द फूड, लाइक ज़ोमैटो है, और भी आजकल तो बहुत सारे क्लाउड किचन है, सो मच इन लाइव क्लाउड किचन्स, तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ऐसा चैटबॉट उन्हें सेल कर सकते हो। इवन जैसे ये जो स्पेक्स की इंडस्ट्री है, लेंसकार्ट है, और भी अलग-अलग डोमेन्स पे आप जाके ये बी टू बी वाला बिज़नेस कर सकते हो। एंड दीज़ आर सम ऑफ द टूल्स दैट कैन हेल्प यू इन डेवलपिंग दोज़ चैटबॉट्स ऑटोमैटिकली, और ऑब्वियसली अपनी खुद की वेबसाइट के लिए तो आप कर ही सकते हो। सो इट इज़ सो ईज़ी, यू डोंट नीड एनी टेक्निकल मैन टू डेवलप इट फॉर यू, राइट? इट इज़ रियली वेरी ईज़ी। So next slide, please. So these are some of the ideas which can definitely help you in enhancing your businesses and scaling. If you are a newbie into startup, then again, personalized health monitoring is again a very big game. So I know that after COVID, health is taken a toll on all of us, and we are all so cautious about health कि हमारे लिए priority आज की डेट में सबसे important ये रह गई है कि we have to be healthy, राइट? तो आप ऐसा कुछ हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्रिएट कर सकते हो बीइंग अ स्टार्टअप व्हिच कैन हेल्प कस्टमर्स, लाइक व्हिच कैन हेल्प देम ट्रैक देयर हेल्थ। जैसे आजकल बहुत सारे एआई सिंक्ड वॉचेस आती हैं, राइट? बहुत सारी आजकल तो रिंग आने लगी है, एआई सिंक्ड रिंग दैट ऑटोमेटिकली you just have to wear that ring, and it tells you about your heart rate, about how much steps you have walked throughout, what is the temperature around. It can be easily synced with the app. So आप easily एआई को यूज करके ये हेल्थ इंडस्ट्री का बिजनेस भी आप स्केल अप कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन अ रिसर्च, आई एम टेलिंग यू दीज टॉप 10 एआई बिजनेसेस जिनके लिए आपको सिर्फ बेसिक एआई मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, बेसिक एआई टूल्स की नॉलेज चाहिए, एंड यू कैन स्केल योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अगेन वन ऑफ द रियली गुड डोमेन जिसमें आप यू नो business कर सकते हैं। Then again, there is one more good idea when it comes to AI is a smart home energy saving with AI. So again, energy भी आपकी सेव हो रही है, राइट? आप जो हमारे यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं और हम फोकस करते हैं इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ इट कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट लोएस्ट रहे, ठीक है? तो चीजें बहुत ऑटोमेटेड हो गई हैं, ठीक है? बहुत एआई ओरिएंटेड हो गई हैं, तो आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं कस्टमर को कि यू हैव अ स्मार्ट होम अराउंड यू, कि जैसे ही आप घर आ रहे हैं ऑफिस से, अपने आप लाइट्स ऑन हो जाएँगी। दे आर ऑल ऑटोमेटेड, राइट? दे आर ऑल एआई ड्रिवन, ठीक है? लाइट्स ऑन हो जाएँगी, कर्टेन्स अपने आप शेड ऑफ हो जाएँगे, एंड व्हेन यू आर एग्जिटिंग दे डोंट हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा कि हम फैन ऑन करके भूल जाते हैं या लाइट्स ऑन करके भूल जाते हैं। बट विद एआई
आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी सेव कर सकते हो, यू कैन बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज आपने एक स्मार्ट होम क्रिएट कर दिया है, राइट? विद अ टच एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो आप जैसे एंटर हो रहे हो, ऑटोमेटिक सिग्नल्स आ रहे हैं, एंड देन लाइट्स आर ऑन, कर्टेन्स आर ऑफ, टीवी इज बीन प्लेड, म्यूजिक इज बीन टर्न्ड ऑफ, टर्न्ड ऑन। तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन भी दे सकते हो कस्टमर्स को थ्रू योर प्लेटफॉर्म, एआई ड्रिवन, कि we can help you develop a smart home solution because this is the need of the hour, and I have really seen it, especially अगर आप मेट्रो सिटीज में देखें जहाँ पे लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, people are running like crazy. They really need these kind of a smart solution जिनसे उनकी लाइफ इजी हो जाए, उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, उनके एक्सपेंसेस कम हो जाए, और they save a lot of time on all these things, right? So next slide please. So these are some of the really smart AI solutions जो आप अपने business में कर सकते हैं. Then again, this is the best business idea that I can give you when it comes to AI for startups is that AI powered marketing strategy, right? Marketing strategy में AI में आपको कुछ नहीं करना, you just have to have your own website जिसमें आप marketing solutions दे रहे हो businesses को, right? What kind of a marketing solutions? Like influencer marketing, like if you are an influencer, we can help you collaborate, हम आपकी content create करेंगे, video contents बना के देंगे। video content के लिए भी आप बहुत सारे ऐसे tools हैं जिनको आप use कर सकते हो, आप even written जो आपकी scripts होती हैं, उसमें आप chat GPT को use करके बहुत अच्छी scripts बना सकते हो, that how this kind of influencer should present or say, or what kind of analysis that you have done in influencer business की कैसे आप स्केल कर सकते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड ब्रांड, वैसा आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर आप कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप दे सकते हैं एआई ओरिएंटेड जिसमें आप उन्हें कंटेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे हैव सम काइंड ऑफ अ टेक प्रोडक्ट, उनके पास कुछ रेडियो सिस्टम है या कुछ भी ऐसे और टेक प्रोडक्ट्स है, तो उनका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, उनके प्रोडक्ट को प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना कि किस टाइप की ऑडियंस इज मोर इंटरेस्टेड इनटू इट। तो आप ऐसी सजेशंस दे सकते हो बिजनेस को, बेस्ड ऑन दैट दे कैन प्लान देयर स्ट्रैटेजी कि हमें अपने प्रोडक्ट में क्या और इनोवेट करना चाहिए, क्या कुछ नया करना चाहिए, या फिर कैसे उसको और सेल करने में हेल्प होगी, राइट? सो ये सारे मार्केटिंग सॉल्यूशंस आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। अगर देयर इज काइंड ऑफ इमेजेस आप क्रिएट करके उनको दे सकते हो फॉर देयर वेबसाइट और फॉर देयर पेजेस, फॉर देयर सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज आई थिंक आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा कुछ नहीं है, राइट? वी ऑल एग्री ऑन दैट, क्योंकि हर इंसान इंस्टाग्राम पे, एवरीवन इज देयर ऑन फेसबुक एंड ऑन लिंक्डइन, एंड एवरीवन नीड्स कंटेंट टू बी पोस्टेड, बी इट कंपनीज, बी इट पर्सनल ब्रांड्स, राइट? तो वो आपकी पीजी हो सकती हैं, उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू यूज एआई टूल्स टू मार्केट एंड स्केल योर बिजनेस। आपको कुछ अलग से हायरिंग भी नहीं करनी है, जैसे पहले करनी पड़ती थी, वी यूज्ड टू हायर अ टीम ऑफ मार्केटिंग पीपल, वी यूज्ड टू हायर अ टीम ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, राइट? आप अपनी 1-2 की टीम में ही कंटेंट भी लिख सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। So again, this is one of the really good businesses if you want to make a mark in, AI marketing space. This is really good. Next slide, please. So, these are some of the really good ideas that I'm suggesting you. And also, I would always say that, there are pros and cons of everything, right? तो जैसे हमने ये जो boom देखा है last few years में with AI, ML, deep learning, so डेटा का भी थ्रेट हुआ है, डेटा का भी बहुत मिसयूज भी हुआ है, मिसलीड भी हुआ है, तो हमें बहुत कॉशियसली हर चीज यूज करनी है एंड बहुत एथिकल एआई वे में करनी है, राइट? वी कैन नॉट ब्रीच एनी ऑफ द लॉज या रूल्स, या कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। तो अगेन हमने देखा कि क्राइम कितना बड़ा इशू बन गया, लाइक स्पेशली साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी काइंड ऑफ अ क्राइम, जहाँ पे ओल्डीज, हमारे जितने भी ओल्ड जनरेशन है या जितने भी पुराने लोग हैं जिन्हें नहीं आता है फोन यूज करना या नेट बैंकिंग यूज करना, या जिन्हें नहीं आता है ऑर्डर करना कुछ भी ब्लिंकिट से, जोमेटो से, या कुछ भी नहीं करना आता है, दे बहुत इनोसेंटली शेयर द ओटीपी एंड गेट मिसयूज्ड, राइट? तो क्राइम भी बहुत बड़ा है। आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हो उनका पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए, आप ऐसा कोई एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की एक वॉल हो, जो भी हु इज नॉट दैट टेकी
वो वाली जनरेशन वाला यूज कर रहा है अपना फोन, तो आपकी ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन यू कैन गिव टू द सोसाइटी, बिकॉज़ ये मैंने अभी सबसे बड़ा पेन पॉइंट देखा है, स्पेशली विद ओल्ड जनरेशन एंड स्पेशली विद किड्स, क्योंकि किड्स के पास अभी नया-नया समझ में आया है टीनेजर्स को कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद एआई एंड दे वांट टू ट्राई एवरीथिंग, बट दे आर नॉट कॉशियस, दे आर नॉट एट ऑल कॉशियस अबाउट कि किस लेवल तक उसको यूज़ करना है, एंड दे शेयर एवरीथिंग इनोसेंटली, ऑल देयर डेटा, एंड देन इट गेट मिसयूज्ड, राइट? तो आप ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हो उनके लिए which can help them in that, and बहुत सारे AI tools ऐसे हैं which helps you in creating these applications as well. तो आप ऐप भी AI से बना सकते हैं and solve these problems. So just imagine आपका मतलब these are the solutions that I'm telling you with zero budget. You don't need anything, anyone. आप अपने एक अकेला ही इंसान अपना खुद का स्टार्टअप आज की डेट में क्रिएट कर सकता है. It has become so easy. And धीरे धीरे जैसे स्केल अप होता है, then you can keep on adding your team, right? So again, this is a very good idea and suggestion that I would give to the people, like to the startups who want to make some mark in AI industry. Next slide, please. So again, one of the amazing ideas is that हमने अभी देखा है कोविड के बाद स्पेशली दैट डिप्रेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट? नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. सो यूरोप हैज़ एडवांस्ड, लाइक अगर हम यूरोपियन कंट्री में देखें तो वहाँ पे भी बहुत लोनलीनेस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओल्डीज, राइट? बिकॉज़ देयर इज़ नोबडी टू टॉक, उनका सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड होता है, राइट? एंड इस समय जब कोविड गया था, एवरीवन, सबके घर में देयर हैज़ बीन अ लॉस, राइट? लॉस ऑफ समबडी. सो देयर इज़ सच अ पेन कि अगर आप उस चीज़ का कोई मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन निकालते हो, आप कोई लोनलीनेस का सॉल्यूशन निकालते हो, then it is again a win-win. It's a really good suggestion. और उसमें भी आपका कुछ नहीं जाना है, because there are AI assisted, I would call it mini robots kind of chatbots होते हैं, या फिर ऐसे instruments type के maybe you can create. Initially तो आप chatbot से या कोई ऐसे platform से start कर सकते हो, क्योंकि there are some countries like Sweden, अगर आप research करो तो वहाँ पे there are mini robots that they have created, क्योंकि वहाँ पे loneliness की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गई थी. तो दे हैव क्रिएटेड अ मिनी रोबोट्स जिनका सिर्फ यही काम होता है कि ओल्डीज से बातें करना. सी दिस जनरेशन विच इज इनटू लोनलीनेस दीज डेज, क्योंकि अब सब टेकी हो गए हैं, ठीक है, सब मोबाइल पे लगे रहते हैं. नोबडी हैज द टाइम टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, हाउ आर दे, व्हाट आर दे फीलिंग, एंड ऑल दे नीड इज योर टाइम, राइट? उन्हें सिर्फ आपका टाइम चाहिए, एंड हम वही टाइम उन्हें नहीं दे पाते. एंड आई डोंट ब्लेम you guys, because हम सब अपनी लाइफ के रूटीन कोर्स में इतने ज्यादा बिजी हैं that we really don't get time to give it to them, right? तो अगर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालते हो एआई के थ्रू विच इज जस्ट टॉकिंग टू देम, आस्किंग देम हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे डूइंग, you know, that helps them heal, that helps them feel good, that helps them feel important. तो आप इफ यू स्टडी एंड रिसर्च अबाउट इन स्वीडन एंड बहुत सारे अदर कंट्रीज इन यूरोप, उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, और दे हैव सीन रिजल्ट्स इन लास्ट 1 year कि बहुत ज्यादा लोनलीनेस और डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम हुई है, because they have got these chatbots assisted robots which are helping them, which are hearing them, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक वॉइस वाला उसमें फीचर ऐड ऑन कर सकते हो. दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इफ यू आर ब्रिंगिंग इन इंडिया, दे विल रियली रियली हेल्प. दिस इज समथिंग रियली, और ये भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, राइट? लाइक आई टोल्ड यू, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको रोबोटिक चैटबॉट्स क्रिएट करने में. तो आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो अपनी स्पेस में विच इज हेल्पिंग इन मेंटल हेल्थ, की मेंटल is so important and nobody is talking about it, right? And especially for that generation and also for Gen Zs, right? क्योंकि हमारी ये जो जेनजी वाली जनरेशन है, दे आर ऑल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूरे टाइम बिजी रहती हैं, बट दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग इन देयर हेड एंड नोबडी इज आंसरिंग इट. और वो हमेशा न्यूट्रल बात करके ही आपको डिसीजन देगा या आपको सजेशन देगा चैटबॉट, वो कभी भी बायस सजेशन नहीं देगा. सो अगेन दिस इज अ एडवांटेज, राइट? तो ऐसे हम एआई को यूज कर सकते हैं और इसमें भी आपका कुछ नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, right? This is again one of the ideas. So next slide please.
So, I mean, there are a lot of other AI platforms and ideas that you can use, like again for e-recruitment solutions as well. तो आप अपनी एक खुद की एक website AI website create कर सकते हैं, where you can, you know, because most of the people these days, especially our generation and youngsters, are struggling with job, right? Everyone want to be hired in a good company, in a job, right? तो उनको job assistance कैसे मिले? की रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं, वेयर इन कैंडिडेट्स विल फिल देयर डेटा, वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे डालेंगे, रिक्रूटर्स विल कम, क्योंकि अच्छी कंपनीज में एचआरस आर आल्सो लुकिंग फॉर रियली गुड कैंडिडेट्स एज वेल, राइट? सो एचआरस भी अपना डेटा, कंपनी वाले भी अपना डेटा डालेंगे, कैंडिडेट्स भी डालेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन बी द मीडिएटर एंड द प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सिंक होके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके हमारी कंट्री में। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, और इसमें भी आपका कुछ नहीं जाना है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट ए आई वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ कंटेंट थ्रू ए आई वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू डू ए आई मार्केटिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, एंड वहां से आपको कैंडिडेट्स का डेटा मिल जाएगा, और उनसे आप हेल्प कर सकते हैं, इवन कंपनीज की कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकते हैं टू गेट देयर जॉब्स। So it is win-win for both of them. So next slide, please. And these are all, you know, proven and the most happening solutions that I am giving you. Now, you know, some of the basic, अगर मैं एकदम scratch से और एकदम zero level से बात करूं कि what exactly you need to have a startup idea is that, क्योंकि दिन भर में हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, राइट? समटाइम वी वांट टू ओपन अ क्लोथिंग स्टोर, समटाइम वी वांट टू गेट इनटू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, समटाइम आई वांट टू डू द मार्केटिंग, समटाइम्स आई वांट टू गेट इनटू फूड इंडस्ट्री। तो आप उन आइडियाज को वैलिडेट कैसे करोगे? दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, राइट? सो आई वुड जस्ट सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए ऑफ ऑल योर आइडियाज, जो भी आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, राइट? हर आइडियाज से रिलेटेड आप एक नेम सजेस्ट करें कि व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस यू रियली वांट टू डू इट, एंड आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगेन दिस इज समथिंग रियली ट्रू, एंड इंटरेस्ट के साथ आपको, जैसे मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड बताया था, कि आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी होना बहुत जरूरी है कि कस्टमर की क्या डिमांड है। इफ यू आर नॉट केटरिंग टू दैट, देन इट इज अ जीरो बिजनेस, राइट? तो आपको ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस एआई से ही हेल्प करेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिकॉज इट विल हेल्प यू डिजाइन कि कस्टमर व्हाट एग्जैक्टली डू दे नीड, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज देयर पेन पॉइंट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व इट, राइट? फिर आप अपनी एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, राइट? आप गो डैडी से बना सकते हो, आप एआई प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जिनसे एआई टूल्स यूज करके आप अपनी एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, अपना एक लैंडिंग पेज खुद का क्रिएट कर सकते हो, आप लोगोस क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी यूज करके, अपना खुद का एक ब्रांड लोगो बनाओ उसके बाद, राइट? आप लाइक अपनी वेबसाइट बनाते के साथ ही साइमल्टेनियसली, सो विद इन सेकेंड्स यू कैन मेक योर लोगो। आप चैट जीपीटी पे ऑप्शन होता है, यू कैन क्रिएट अ लोगो, यू कैन क्रिएट अ कंटेंट, आप अपनी एआई टूल से वेबसाइट बना सकते हो, आप अपने आइडिया को डिफाइन कर सकते हो, एंड यू कैन यू नो, आफ्टर दीज आर द प्रोसेस, आफ्टर वैलिडेटिंग योर आइडियाज यू कैन डू, राइट? तो अकॉर्डिंगली आपका एक अच्छा खासा एक बिजनेस ऑलरेडी सेटअप हो गया है, राइट? इट इज द फर्स्ट लेवल दैट यू हैव अचीव्ड। उसके बाद आपको सिर्फ स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट को और इनोवेट करना है, एनहांस करना है, और अपनी यू नो टीम को एड ऑन करना है। सो दीज आर सम ऑफ द रियली बेसिक सजेशंस एंड आइडियाज दैट आई वुड जस्ट गिव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So, you know, if you just implement these ideas, I think it will really help in a long way, because ये जो AI marketing tools मैंने आपको बताए हैं, और how AI can help in marketing, especially for startups, especially in this last 1 year, is the big thing. Like अगर आपने इसको scale कर लिया, it will save your time, it will save your cost, it will reduce your you know operational expenses, आपकी ओपेक्स कम हो जाएगी, आपका बहुत सारा टाइम, आपका ह्यूमन रिसोर्स
जो आप हायर करते हो वो आपका सबसे ज्यादा चक ऑफ हो रहा है। आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस पता चल रहा है, आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट जिसमें आप देख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, उसके बेसिस पे आप वैलिडेट कर सकते हो अपने आइडिया को, ये सब आपको पता चल रहा है। So I think this is one of the biggest boom that this generation and this genre of startups have got, because पहले business करना बहुत tough होता था, अभी with the boom of AI it has become really easy. Though competitive है थोड़ा, but then it is again really easy. So yes, with that, I'll just wrap up today's session. And in case you have any questions or any queries, please feel free to ask. And you all can join me on LinkedIn as well, because I keep posting on LinkedIn about startups, about AI, so we can get connected there and maybe help each other. So, yes, Sanjana, do we have any of the questions? Yeah, before we address some questions, I want thank you, Nishtha, for that wonderful presentation. The insights you have shared on how AI can improve marketing strategies for startups were really impressive. I'm sure our audience has learned a lot of useful information today. So we have some questions. So let's address some of the questions that have come from our viewers. So the first question is, how can AI help startups maintain cost efficiency while reaching their target audience? All right. First of all, thank you so much, Sanjana. Thank you so much for bearing up with me and playing the slide throughout. That's really kind of you. Thanks a lot. So, and thank you for the question as well. So see, like in the beginning, I just mentioned that how it can affect cost, right? आपका क्योंकि operational cost सबसे important cost होती है when it comes to startup, right? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग hire करने पड़ते हैं, आपके electricity के bill होते हैं, आपके बहुत सारे तमाम और expenses होते हैं, right? बट चीजें जब ऑटोमेट हो रही हैं, देन विद इन सेकेंड्स एवरीथिंग इज बीइंग डन। सो थिंग्स आर सो ऑटोमेटिकली डन, तो आपको ना तो आपको किसी बंदे को पे करना है टू हायर समबडी, लाइक अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, आपको कंटेंट टीम आपकी जीरो हो गई, वहां पे आपको सैलरी किसी को देनी नहीं है, आप खुद ही अपने लेवल पे ये सब कर रहे हो। सो सी, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस दैट इज बीन एन एफिशिएंसी दैट इज बीन मेंटेन्ड हियर। आपकी वो कॉस्ट पूरी कम हो रही है। एंड इफ यू आर इनटू लाइक, आपको टीम रखोगे आप, तो फिर ऑब्वियसली उनके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, बिकॉज यू हैव टू हैव अ ऑफिस। आप घर से ये वाले एआई वाले मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हो, राइट? आपको खुद का एक ऑफिस भी नहीं चाहिए, आपकी रेंटल कॉस्ट जीरो हो रही है। तो व्हेन इट कम्स टू रेंट, टू पेइंग सैलरीज, टू पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सारी आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, एंड यू कैन डू इट एट योर होम, एट योर ओन स्पेस, एंड विद इन फ्यू मिनट्स ऑन योर ओन। सो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज सेविंग द टाइम एज वेल। So again, I hope I have answered the questions, but these are the ways through which you can, save your cost and time. Okay, we have one more question. What AI tools or platforms should early stage startups use for marketing? All right. Yes, this is a very good question. So, abhi to bahut sare AI tools hain, right? After the session, maybe I'll just share the list of AI tools with Sanjana so she can float it with the audience later on. But the most important AI tools that I would suggest you for marketing people, professionals, and people is number one, Chat GPT. Chat GPT पे आप सब कुछ कर सकते हो, like आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, आप you can create a lot of things, like आप, if you are into coding, अगर आप coding engineer हो, you can create codes within seconds. Earlier it used to take so much of time, right? बहुत सारी चीजें आप easily कर सकते हो. So ChatGPT is number one tool that I would suggest for marketing professionals. Number two is Mid Journey. तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को पिक्चर सेल कर रहे हो, ठीक है, जैसे उनका कोई प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो आप मिड जर्नी को यूज करके अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हो. सो अगेन, इट हेल्प्स इन रियली गुड वे मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए. अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना रहे हो, ऑब्वियसली आपको उसमें पिक्चर्स भी चाहिए होंगी, राइट? तो वो आपकी कस्टमाइज्ड इमेजेस बना के आपको देगा. दिस टूल विल really help you to scale your business. And number three, I would suggest is Canva.
So Canva is again really good tool that I would suggest. And जब से उनका AI feature आ गया, that really help marketers to create even videos. तो आप इतनी amazing AI videos बना सकते हो using Canva. आप अपने banners, posters बना सकते हो बहुत easily, creatively. You don't have to hire a social marketing agency. आपको उनको कुछ नहीं पे करना है, ये आप खुद create कर सकते हो. So these are some of the top 3 tools that I would suggest from the marketing point of view and AI point of view that you can use. Apart from that, I'll definitely share the list of many other tools. बहुत सारे हैं. I hope I have answered the question. Yeah, thank you, Nishtha, for answering all these questions, and thanks for all your wonderful questions. So before we wrap up, big thanks to Dr. Nishtha for sharing her valuable knowledge and experience with us today. We also want to thank all the participants for joining us and making the session so interactive and engaging. And if you have further questions or need assistance, feel free to reach out. Make sure to implement the insights gained today in your startup journey. Wishing you all success in your startup journey. Stay tuned for more sessions. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, everyone. Take care. Bye.